understood the straight line. In that, some more concepts like first concept we have to understood for the straight line is slope. Then second is equation of a lines. Equation of a lines. Okay. Like starts with the slope first. Slope. Going for the slope first, I'm telling the definition of inclination of a line. Inclination of a line. What does it means? Okay. Let's see. In a Cartesian plane, if I draw any line, it makes some angle with positive x-axis in anti-clockwise direction. It makes some angle with positive x-axis in anti-clockwise direction, and that angle is called as a inclination. Inclination of a line is the angle made by the line is the angle made by the line with positive x-axis in anti-clockwise direction is called inclination. It is denoted by it is denoted by generally theta. It is denoted by theta. Okay. Then what is slope? Slope is the tangential angle of that line. Slope denoted by m, denoted by m, and given as m is equals to tan theta. M is equals to tan theta. Okay. Let's move forward. If I know any 2 points on a line, this is the formula when I know the inclination of that line. Inclination of a line I know, then I have to find the slope. Then using tangential angle. For example, if I say our inclination of a line is 30 degree, then its slope is m is equals to tan 30. Tan 30 is how much? 1 by root 3 is the slope. Okay. If I know the 2 points on a line, 2 points on a line, say x1, y1 and x2, y2. That means there is a line on which 2 points are there, say A and B. A has the coordinates x1, y1, and B has the coordinates x2, y2. Then slope of a line is given as difference between y coordinates upon difference between the x coordinates. That means slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Y2 minus y1 upon x2 minus x1. Some important notes are there. The first note is the slope of a line, the slope of x axis
and a line parallel to x-axis, parallel to x-axis is 0, as it makes an angle 0 with positive x-axis. Second, the slope of y-axis and a line parallel to y-axis y-axis is not defined, as tan 90. See, y-axis makes an angle with positive x-axis 90 degree na. So every line which is parallel to the y-axis also makes an angle with positive x-axis 90 degree. So tan 90 is not defined na. So their slope is also not defined. Okay, means y-axis has no slope. Third note, from that two concept I got to know the slope of parallel lines. The slope of parallel lines are equal. Are equal. The next concept, fourth one, if theta is the angle between theta is the acute angle between theta is the acute angle between two lines with slopes m1 and m2, then tan theta is equals to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Means there are two lines like that, they are intersecting each other at an angle theta. Okay, this line L1 which has slope m1, this line is L2 which has slope m2, like that. Okay, the fifth note is, acha listen, if I say the angle between the lines is 90 degree, if the angle between the lines is 90 degree, then tan 90 is not defined. Tan 90 is not defined. The not defined term will get from the denominator becomes 0. So if the denominator becomes 0, that means 1 plus m1 m2 0, which implies that m1 into m2 is equals to minus 1. From that I will get one more formula, that if if two lines are perpendicular in bracket, no line is no line is parallel to axis, means their slope is defined. Okay, if two lines are perpendicular with slopes m1 and m2, then m1 into m2 is equals to minus 1. That means product of their slopes is minus 1. For example, in this Cartesian plane, in this Cartesian plane, x dash, y dash, this is the origin. If I have a line like this and a perpendicular line to this is like this, okay, these are perpendicular lines.
Then if I know their slopes, this is the line L1 with slope M1, this is the line L2 with slope M2. Then what I know, that M1 into M2 is equals to minus 1. M1 into M2 is equals to minus 1. If the lines are perpendicular, then M1, M2 is equals to minus 1. And if the lines are parallel, then slopes are equal. Slopes are equal. And vice versa. Both way it is true. But in this, remember that if two lines are perpendicular, no line is parallel to the y-axis. Means like that. We don't need this one. For that, we don't say M1 into M2 is minus 1. Okay. For this, we don't say M1 into M2 is minus 1. Okay. Got it? Is there any doubt you people have? Yes, any doubt? Okay. Let's see. Now, moving forward, equation of a line. Equation of a line. Okay. Let's see. First, slope point form. The equation of a line passing through a point P x1 y1 and having slope M is given as is given as, let's see what it is saying. This is the line L, its slope is M. I'm taking a point P which has the coordinates x1 y1 and a coordinate Q which is a moving coordinate on that line, general point, say Q x comma y. X comma y is the any general point. Okay. Then what I'm saying is slope is nothing but the difference between y coordinates upon x coordinates. So from that I will get that y minus y1 is equals to m times x minus x1. This is called as a slope point form. This form of equation is called as a slope point form, where I know the point and I know the slope. For example, if I say equation of a line, equation of a line passes through 2 comma 3 and having slope and having slope 3 is, we get the equation y minus 3 is equals to 3 times x minus 2. If we multiply it, then we'll get the equation of a line 3x minus y minus 3 equals to 0, like that.
3x minus y minus 3 equals to 0. Got it? The first one, slope point form. Yes. Okay, the second is 2 point form. Let's see. If I know the any 2 points on that line and I have to find the equation of a line, it is a very simple one. See, if this is a line, this is the line which has 2 points. Say one point is x1, y1, and another point is x2, y2. These are the known points. Say A, B, and P is the moving point. Say x comma y, x comma y. Then remember that the slope of PB is equals to slope of AB. Slope of PB is equals to slope of AB. In 2 point form, how we find the slope of PB is like that: y minus y2 upon x minus x2, and slope of AB is y2 minus y1 upon x2 minus x1. After rearranging the terms, y minus y2 upon y2 minus y1 is equals to x minus x2 upon x2 minus x1. This is the equation of a line in form of 2 point form. 2 point form. This can also be written as y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to x minus x1 upon x2 minus x1. Like that also we can write. Okay. Y minus y2 upon y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to x minus x1 upon x2 minus x1. इसे बोलते हैं 2 point फॉर्म. आगे बढ़ते हैं. थर्ड वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अब ये क्या होता है वो समझते हैं. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? ठीक है. अच्छा, पहले ये बताओ, डू यू नो अबाउट द इंटरसेप्ट? व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट? Sir, intercept is the distance from origin to x along x-axis and y-axis. Is that from any side? Na, any side. Very good. It is also like this. This is called as an intercept, and this is also called as a intercept. Very good. Let's see now what we are doing here. Slope intercept form. This is our Cartesian plane. Okay, this is the Cartesian plane. I draw a line. I draw a line which has a, we need slope now. So I say this line has L with slope M. It has a slope M, and this distance is C. If this distance is C now, so this point is 0 comma C. 0 comma C. Okay. We know the y intercept. Y intercept means, here I say
slope is m, slope is m, y intercept is c. So I know the point. What is the point? 0 comma c. So I'm using slope point form. What is the slope point form? See here, y minus y1 is equals to m times x minus x1. This is the value, this value is x1, y1. So I'm substituting in that formula, y minus y1 is equals to m times x minus x1. After substituting the values, y minus c is equals to m into x minus 0. So we'll get y minus c is equals to mx, y is equals to mx plus c. This equation is called as a slope intercept form, where c is the y intercept. C is the y intercept. So one more thing, if in that I'm going for the case two. Case two is slope is m, and I know the x intercept. Say I know the x intercept equals to b. Okay? That means if I draw a line like that, it cuts the x-axis at a distance b from the origin. This distance is b. So this point becomes now b comma 0. B comma 0. Okay. And this line L with slope m and x intercept b. So I will get the point x1 y1 as b comma 0. So equation is y minus 0 is equals to m times x minus b. So y upon m is equals to x minus b. This implies that x is equals to 1 upon m times y plus b. This is the equation of a line which is slope intercept form, but here the b is the x intercept. B is the x intercept. Let's move forward. The fourth one. The fourth one is double intercept form. Double intercept form. That means I have both the intercept x and y. If I draw a diagram, and I say there is a line which intersect both the axes, and it divides the x-axis at a unit and y-axis at a b unit. Okay, so I will get this point as a comma 0, and this point as a 0 comma b. 0 comma b. So I have 2 points. I have 2 points. What are the 2 points? Say if I say x1 y1 is equals to 0 comma b, and x2 y2 I say a comma 0. A comma 0. Then equation of a line is y minus y2 upon y2 minus y1 is equals to x minus x2 upon x2 minus x1. After substituting the values, you will get y minus y2 is 0. 0 minus y1 has the value b is equals to x minus x2. x2 means we have here a, and here a minus 0. So what is the remaining now? Y upon minus b is equals to x minus a upon a. If I divide it separately, it becomes y minus y upon b is equals to x upon a minus a upon a. This become 1,
minus 1 will go there positive and this will also positive. So we'll get x by a plus y by b is equals to 1. That is x upon x intercept plus y upon y intercept is equals to 1. This is the equation of a line in double intercept form. आप लोग नोट कर रहे हैं ना? यस सर। हाँ, कोई Yes, डाउट sir. रहा आप लोग मैसेज कर सकते हैं या फिर अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं. Sir, second last. ये वाले में No, sir, second last. this Yes, one, sir. yeah, Yes, x sir. Second. intercept one. Yes. Yes, Okay, sir. listen. What I'm saying, if I know the slope and x intercept, here I know the slope and y intercept, na. So y intercept has the point 0 comma c. So we substitute these values in slope point form. Okay, because I know the slope and the point. We are using this. So y minus c is equals to m times x. So y is equals to mx plus c. Similarly, if I know the slope and the x-intercept, so the point becomes b comma 0 now. So I'm using again slope point form. Slope point form, what is the slope point form? Y minus y1 is equals to m times x minus x1. Substitute the value of x1, y1 here in this equation. So you will get y minus 0 is equals to m times x minus b. So after that, we'll get from there, I'm writing here, y is equals to m times x minus b. This m is here in multiplication, so I send that. So it goes for the division. Y minus m is equals to x minus b. And after that, we transfer b there. So y is equals to, sorry, x is equals to y by m plus b. This is called as a slope intercept form, but this intercept is nothing but the x intercept, not the y intercept. Got it? Yes, sir. This intercept is nothing but the x intercept. Okay. Any other doubt? Okay. Double intercept form. Now, let's see. I'm going to just remind you some things. Fifth, fifth one is called as a normal form. Normal form. Before going to the normal form, we just remind what is the polar coordinates. What is the polar coordinates? Anyone know? Yes. What is the polar coordinates? Let's see. What is the polar coordinates? I will explain it. Listen carefully. Listen. If I say x comma y is the point in the Cartesian plane, in this perpendicular distance is nothing but y, and this horizontal distance is nothing but the x. Okay. I have to reach this point. I have two ways. First way is I will go along with x-axis and then along with y-axis. Okay, this is the way. And the second way is I start my journey with the origin at some angle theta making with positive x-axis
and at some distance say r. I have distance some r. So I also reach the same destination with this logic. Okay, I have some angle theta with the my with positive x-axis, and after that I will go for the some distance r. Then I will reach the same point, say p, r and theta. Now listen carefully. I will get a right angle triangle. We get a right angle triangle in which the opposite side is y, the opposite side is y, the adjacent side is x, and the hypotenuse is r. So if I want the value of a sine theta, then we'll get y upon r. This implies that y is equals to r sine theta. And if I want the value of a x, then it becomes r cos theta. As cos theta is nothing but x upon r. So the values of x and y in terms of r and theta are called as a polar coordinates. R and theta are called as a polar coordinates. These are the polar coordinates, not these. These are the Cartesian coordinates. X and y are called as a Cartesian coordinates, and r and theta are called as a polar coordinates. It's called as a polar coordinates. Okay. So before going to the normal form, if I say, if I say, listen, this is a line, x-axis, this is the y-axis, x dash, y dash, and this is the origin. This is the origin. If I have a line like this, okay, I want to find the equation of a cube line. We are finding, we are finding the equation of this line, where, where it has some perpendicular distance p from the origin. Some perpendicular distance from the origin, and this perpendicular line makes an angle with alpha. This line makes an angle alpha. So these coordinates are p cos alpha and p sin alpha, as we get it from the polar coordinates x comma y. X has the value p cos theta, and y has the value p sin theta. So it becomes p cos alpha and p sin alpha. Acha, one more thing. Can you tell me about this angle? What, how much this angle is now? How much this angle? Yes, anyone? Sir, 180 minus R. Not this. Acha, you don't remember that the sum of remote interior angles is equal to the exterior angle? The sum of remote interior angles is equal to the exterior angle. Or you consider like this. If I say this is 90, this is alpha, and this is A, then A plus alpha plus 90 is equals to 180, na? A plus alpha plus 90 is equals to 180. And alpha, and this is B. And A plus B is also 180. Then after comparing B becomes alpha plus 90, na? Got it? What I'm saying? There is a theorem which says that the exterior angle of a triangle is equal to the sum of remote interior angles. Exterior angle of a triangle is equal to the sum of remote interior angles. Okay, let's see. Now, acha, I know the inclination now. See here, I know the theta. Theta is 90 plus alpha. And the point I also know, point say x1, y1, which is equals to p cos alpha and p sin alpha. This is the point.
And I know the angle also. So how to find slope? What is the formula for slope? Tan theta. But theta is the value 90 plus alpha. So tan 90 plus alpha, how much it is? Tan 90 plus alpha. How much? Yes, tan 90 plus alpha is how much? Minus cot alpha as it goes to the second quadrant, na? 90 plus theta. Okay, let's see. The slope I got is minus cot alpha, and I know the point. So after using slope point form, the equation is y minus y1 is equals to n times x minus x1. So y minus p sine alpha is equals to minus cot alpha times x minus p cos alpha. P cos alpha. Okay, let's see. Further, y minus p sine alpha. This cot alpha can be written as a cos alpha on sine alpha into x minus p cos alpha. This sine alpha go to there. You multiply it on the left hand side. Sine alpha times y minus p sine alpha is equals to minus cos alpha times x minus p cos alpha. Multiply inside. So you will get y sine alpha minus p sine square alpha is equals to minus x cos alpha minus minus plus p cos square alpha. Transfer this to this and this to this. So we will get x cos alpha plus y sin alpha p cos square alpha plus p sin square alpha. So I will took common p, then inside it is cos square alpha plus sin square alpha, which is always 1. So p into 1 is p. So we'll get the equation x cos alpha plus y sin alpha is equals to 2. समझा क्या? देखो बच्चों, समझा क्या? कोई डाउट है क्या? देखो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, समझ में नहीं आता जल्दी। तो समझने के लिए पहले आपको पोलर कोऑर्डिनेट समझना पड़ेगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स, हेलो सर। कोई डाउट है? यस। सर ये पूरा डेरिवेशन समझने की जरूरत है या फिर फॉर्मूला से हो जाएगा? नहीं नहीं, आपको फॉर्मूला याद है, ये तो डेरिवेशन समझाने के लिए दिया था, है ना? तो ये याद रखना है ना? अच्छा, एक सबसे जरूरी बात, P is always positive. The reason behind that, P is the perpendicular distance from the origin of a line. P is what? P is perpendicular distance of a line from origin. So it cannot be negative. It is always positive. Okay. So sometimes line is also passes through the origin. If the line is passes through the origin, na, then P becomes 0. If the line is passes from the origin, then P becomes 0. This is the straight lines. We'll continue tomorrow again. Okay. Now we are going for the aptitude syllabus. Aptitude syllabus. So today we are going to learn about the number coding.
IMU CET के लिए ठीक है चलो. अच्छा, you do one thing. What do you do? You should write the squares from 1 to 20. Do it fast, little fast. 1 to 20, write the squares first. We are going to learn for the number coding. Write down 1 to 20 squares. Do it little fast. If you done, then let in a chat box done. Done. 1 square is 1, 2 square is 4, 5 square is 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81, 10 square 100, 11 square 121, 12 square is very good, Rolly. 12 square is 144, 13 square is 169, 14 square is 196, 15 square is 225, 16 square is 256, 17 square is 289, 18 square is 324, 19 square is 361, and 20 square is 400. Okay, these are the squares. Now, write down cubes from 1 to 12. Cubes from 1 to 12. Okay, let's see.
Cubes we know. We know the addition and subtraction also. Addition, subtraction, multiplication, division. These operation we should know. So you're done with the cubes. One cube is one, two cube is eight, three cube is 27, four cube is 64. Very good. Five cube is 125. Six cube is 216. Seven cube is 343. Eight cube is 512. Very good, Akshit. Nine cube is 729. 10 cube is 1000. 11 cube is 1331. And 12 cube is 1728. These are the cubes. Okay. We know about the numbers. Then we are easy to do the coding and decoding of the numbers with alphabets and all these. Actually, you should write now ABCD like that. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Why like this? Ne? Because now it is very easy to understood the number of the alphabet. Okay. This is for the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. If you add any two numbers now, you get the addition always 27. This is one more trick to remember the this one. And one EJOTY. I call it as a EJOT. EJOT. Why? It is at the 5, 10, 15, 20, 25. EJOT. G7 countries are there, na? So I remember this as a G7. These are the some uh, what we shortcuts we remember these one. Okay. Write down the first question. Question number one. If you understood, answer it. In a certain code, in a certain code, 246 is written as 246 is written as 135. 385 is written as 249. How will 586 be coded? First question. Option A is 345, 354, 435, and 453. 246 is written as 135. 385 is written as 249. How will 586 be coded? Right.
Right. Mm. So I think it has some mistake. 586 to 49. 586 46. What you should what you should understood from that. Do you get any pattern? So I think so, like this. 246 na, and it's 135. If I decrease 1 from each, then I will get these numbers. What about this? 385 na? 385. If I decrease 1, then it becomes how much? 274. But it is 249. I think this question is wrong. It is there only 274 only. Now we should find 586. So 586, subtract 111, it becomes 574. 475 is the answer. This question is wrong, student. This question is wrong from the book only. Okay, let's see. Question number two. In a coding pattern, car is written as car is written as 3118, bus as 4221. How is cab? How is cab written? 3124, 3114, 3121, 3224. Great. Sir, B. B is the answer. Yes, 3114. 3114 is the answer. Acha, for like these questions now, you do one easy thing is from here if C has three, so here is also C. So we start with the three. I get after A has one, so A has one, so 3 1. We get the same digit. Again B now the last digit is not the fixed one. See here R has a 18, S has a 21, R has 18 and S has a 21 na again. So last has no equal pattern. So we go for the 3114.
These two numbers are very big na again because B has 4 again here. So I'm going with this. I think so. This book has a very wrong questions again. So let's see. Next question number 4. Question number 4. Sorry. 3. 3. Question number 3. If school is coded as school is coded as 853266. How is school is coded? It is very simple one. 3266, 3366, 3566, 3268. So see here. SCHOOL 853266. So how school is noted? Uh, check it. So sorry, it's 835, huh? Hmm. Option A. Yes, option A is the answer. Just a minute, huh? Option A, na, here we get 3266. Pattern is there, na. Number coding is we have to see the numbers, alphabets, and then we have to arrange it. Then only you will get. ठीक, चले स्टार्ट करते हैं.
Did not get the correct explanation yet. सर स्लाइड थोड़ा डाउन कर दो सर। ये बोल रहे हैं? सर स्लाइड थोड़ा सा डाउन। ओके सर। Just a minute. Question is like that. Next, question number 4. If cat is coded as cat is coded as 24, how dog is coded? Option A 25, 26, 27, 28. Yes, 26. Sir, option huh? number B, 26. 26. 26. Acha. See here, I think so. It's 1, it's 3, and this is at a 20 na ejoti. So if I add this all, then it becomes 24. So for the dog, we have it is 7, and at O is at how much? Ejoti na 15. 15, 15, and D at 4 na. So we add it, so it becomes 26. So the option B is the correct. Yes, option B is correct. Let's see the next question. The question number 5. Zebra is coded as 2652 181. How is
Cobra coded. Option A 3152181. Option B 318 22151. Option C 3152811. And option D 118215 Option A. Option Sir, option A. number A. A. Yes, it is simply, I think so. It's their numbers, na? It's their numbers. Z Yes, E sir. B R A. It is 26, 5, 2, 21. How much? Z E B R A, na? So question again, it is something wrong. It's not 8 there then. It's 1 only. So Cobra is COBRA, na? So C is 3, O is 15, B is 2, R is 18. Sorry, it's 18, na? R is 18. I think it is correct only. R is 18 and A is 1. So answer is 3152181. Option A is the answer. Correct, correct. Next, question number 6. If Go is coded as 32, then how she is coded? Option A 56, 58, 60, 62. Yes. Simple one again.
Yes. See here. Go है ना go. Go में G is at what number? ये तो 15 है. G कितने नंबर पे? 7 ना. 7. So और शी में SHE अगर मैं ले लेता हूँ तो S is at what number? ये 5 हो गया. 8. 19. देखो ना अभी क्या करना है बच्चों लोग. देखो ना 15 + 7 कितना हो रहा है? 22 हो रहा है. नहीं या फिर एक काम करेंगे इन दोनों में. कैसा है क्या पैटर्न ढूंढना पड़ेगा अपने को. समथिंग इज देयर. वो इज कोडेड एज द 32. देन हाउ दिस वन. अच्छा देखो अभी मैंने ऊपर ABCD भी लिखा है ना. गो को देखो. गो GO. If we swap the numbers na, see here. If we swap the numbers na, then if I take G as a 20, see here, G as a 20 and O as a 12, then 20 plus 12 is 27. So we have to take the sum. This 5 as a 21. 32. नहीं 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 32 नहीं आ रहा. देखो ना मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से. अब हमें क्या करना है. इसको है ना 27 बनाना है ना. देखो ना एडिशन. इसका इसका 27 बनाने के लिए 7 में 20 ऐड किया, 15 में 12 और ये दो नंबर को ऐड किया तो 32 आ रहा है. सही है. तो अभी वैसे भी इधर ही बनाएंगे. इधर 9 आएगा. 8 है ना इधर. सो 8 का 27 बनाने के लिए कितना कम पड़ रहा है अभी. मतलब हाउ मच इफ वी ऐड 8 सो बिकम्स 27. इट इज 19 ना. और इधर 8 और इधर 5 का कितना आ रहा है. 22 आ रहा है. तो ये ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया. देखो 30. कुछ तो गड़बड़ करना है. देखो क्या गड़बड़ किया. GH ना. SHE उल्टा ढूंढना है. उल्टा. S का 8 आया. H का कितना आया. 19 आया. E का 22 आया. 22 + 8 30 + 19 49 होना चाहिए. 49. अच्छा बराबर है. बराबर. करेक्ट है. करेक्ट. यहाँ ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया. इट्स 49 ओनली. ये दो ऑप्शन गलत लिख दिए मैंने. 49 एक है और 52 एक है. तो 49 इज द आंसर. करेक्ट है. करेक्ट. तो बताओ अब इसी सेम चीज में इसी में अगर मैंने सम बोला तो कितना आएगा. सम कैसे कोड करेंगे बताओ. सम इज कोडेड एज. कैसे कोड करेंगे इसको. और ऑप्शन जो पहले दिए थे वो 56 58 60 62. सम को कैसे कोड करेंगे बताओ. Sir, option number A, 56. ऑप्शन ए ना. एस के लिए अभी क्या आएगा. 8 आएगा ना. और ओ के लिए 12. एम के लिए कितना आएगा. 14. और ई के लिए कितना आया था. 22. ये सब ऐड करेंगे अगर हम. ये 20 हो गए और ये 22. 44 प्लस. अच्छा ये 20 और 22 कितना हो गया. 44 प्लस. सॉरी 42 + 4 46 एंड 10 56. करेक्ट. 56 आएगा. क्या आएगा. 56.
देखो अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Work is coded as 4, 12, 9, 16. How will love is coded? Option A 12, 12, 22, 23, 15, 12, 5, 22, 12, 15, 22, 5, 16, 12, 5, 23. Try it. Option B. Option B is the answer. Nahi. Check once again. It's not B. Yes, sir. Option B. Yes, sir. Option B. Option A. नहीं, ऑप्शन ए भी नहीं है. Sir, option B. बी आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Option number B. Yes, sir. तो सेम चीज लगे क्या उसमें भी? WORK. इट्स 23, 15, R is 18. बराबर ना? और K, आई थिंक सो, K कितने नंबर पे आता है? 8 पे, 8 नहीं, ये कितने पे आता है? GHIJK 11. 11. 11 पे आता है. 11. तो इसको 4, 12, 9 और कितना होगा? 16 ना. 2916 करेक्ट हो गया ना? डिकोड हो गया ना? मतलब 27 होने के लिए नंबर लेना है. तो अभी लव का पूछा है. LOVE. L इज एट व्हाट नंबर? L कितने पे है? L. 12, sir. JK 12. L ना. L is 12, O is 15. ये 12 पे है, ये 15 पे है. PQRST. ST is at a 20. UV. 22. So it is 22. And this is 5. अच्छा, they are alternate to each other. 15, 12, 5, 22 ना. 15, 12, 5, 22. Correct. B is the answer. Let's see. Question number 8. Your chemistry class is there. Just a minute. Teacher is coming. Okay. See. Machine. MACHINE is coded as 197914152011. How will danger, DANGER,
Be coded. Option A 11, 7, 20, 16, 11, 24. Option B 10, 7, 20, 13, 11, 24. Option C 10, 8, 20, 13, 11, 24. Option D 9, 7, 20, 13, 11, 24. Yes. Sir, I think B. B is the correct answer. B is the correct answer. Yes, what is the logic? What is the logic? Sir, E is 11. So D will be less than 1. So D will be 10. And No, the A will be same. So A is 7. So in that A is also 7. 10, 7, no? Okay, very good. Good logic you have. Listen here. What is there? M is at a 13, A is at a 1, C is at how much? 3, na? So if we add 6 to each, then you will get 19, 7, 9, na? Like these numbers. So D, A, and if I take first three, D as at a 4, A at 1, and N is again at a 14. Oh, sorry. N, I think N is at a 19, na? K, L, M, N. M is a 13, N is a 20, sir. 14. Huh? N is 14. N is at a 14. Oh, yes. If I add 6 to each, then how much will get? Year 10, year 7, and year 20. So 10, 7, 20 is the initial, and this initial is in the only option B. So the answer is option B is the answer. Got it? And now your chemistry class is there. Okay.
Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you? Everything fine? Hello, am I audible? आवाज मिल रही है मेरी? ओके, हम लोगों ने लास्ट टाइम में क्या पढ़ा था? सॉल्यूशंस पढ़े थे, राइट? वी हैव डन सॉल्यूशन. सॉल्यूशंस में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े थे, एंड वी हैव सीन द कंसंट्रेशन टर्म्स, राइट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आ गया था ना? Yes, ma'am. ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट सॉल्युबिलिटी. ठीक है, इसके अंदर एक टॉपिक है सॉल्युबिलिटी. Okay. Solubility means what? Okay. You know what is saturated solution? Suppose you have a solvent. Okay. You have solvent here. Okay. And you have added a few gram of solute. Okay. Is that clear? तो हमने solvent में कुछ solute add करा. Maybe a few grams. Okay. So what will happen? You can add a few more. Okay. Are you getting my point? हमारे पास एक solvent रखा है, ठीक है, सॉल्यूशन है, हम उसमें कुछ सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, फ्यू ग्राम ऑफ सॉल्यूट्स, बट स्टिल उसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते, ठीक है. मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी एडेड, यस और नो? कैन बी एडेड, ठीक है. अभी तक इसमें और सॉल्यूट ऐड करने की कैपेसिटी है, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. दिस इज नोन एज व्हाट? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, एम आई क्लियर? आपके पास अगर एक सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, जिसमें आपने सॉल्यूट ऐड करा, ठीक है, बट स्टिल और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, जब तक उसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, बट व्हाट हैपन इफ यू आर कीप ऑन एडिंग, इफ यू आर कीप ऑन एडिंग सॉल्यूट, आप उसमें सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, ठीक है. अ टाइम विल कम व्हेन, ठीक है, सोल्यूशन में अगर उसके ज्यादा और ऐड करेंगे तो अब डिसॉल्व नहीं हो, ठीक है. व्हेन यू आर कीप ऑन एडिंग सॉल्यूट, a time will come when no more further, no more, now no more solute can be added, ठीक है. अब इसमें और ज्यादा सॉल्यूट ऐड करने की कैपेसिटी नहीं है. नो इट बिकम व्हाट? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नो इट बिकम सैचुरेटेड सॉल्यूशन. Now it becomes saturated solution. समझ आया आपको? Yes. What is saturated solution? Okay, good. It means कि अब इसमें और solute ऐड नहीं हो सकता. It becomes saturated solution. ठीक है? तो solubility, अच्छा, अगर हमने इसको और ज्यादा हीट करा, टेम्परेचर बढ़ा करके ऐड किया, तब इसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है. if you are keep on heating this solvent, सपोज अगर आपको शुगर सिरप बनाना होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? वाटर को हीट कर करके उसमें और ज्यादा शुगर ऐड करते हो, ठीक है, एंड दैट टाइम इट बिकम्स सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है.
जब हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर दिए, मोर देन इट्स इक्विलिब्रियम, इट बिकम्स सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इफ मोर ऑफ सॉल्यूट इज एडेड देन इट्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, देन इट्स इक्विलिब्रियम, इट बिकम्स व्हाट, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, so now what is solubility? Solubility is the maximum amount of solute which can be added to make a solution saturated. ठीक है, simply the solubility is, now we can define the solubility as the maximum amount of solute of solute, ठीक है, that can be added, which can be dissolved, ठीक है, dissolve dissolve to make a saturated solution, dissolve to make a saturated solution. ठीक है, is that clear? Solubility is the maximum amount of solute which can be dissolved, ठीक है, to make a solution saturated. तो ये जो होता है solubility, अलग अलग solvent की, solute की और अलग अलग होती है। ठीक है, so there are so many factors which affect the solubility. तो मेन पॉइंट यहाँ पर यही है कि फैक्टर्स क्या क्या है, और क्वेश्चंस भी इससे ही आते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज प्लीज पूछो आप। ओके, डाउट्स लेके चलने का नहीं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। नाउ टेल मी वन थिंग, हम जानते हैं कि वाटर में वी कैन डिसॉल्व एंथ्रासिन या नैफ्थलीन इन बेंजीन बट नॉट इन वाटर। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो वाटर में डिसॉल्व होती हैं, कुछ होती हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है और बेंजीन में हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, मीन्स एक जो यूनिवर्सल नेचर है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, वो यहाँ पे काम करता है। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, अगर लाइक मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर सेम होगा तभी वो डिसॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर में NaCl डिसॉल्व हो जाता है बट वाटर में ऑयल डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, मीन्स व्हाट, नेचर का मतलब क्या हो गया, पोलर। ठीक है, पोलर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्यूट में पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होगा, एंड in non-polar solute will dissolve in non-polar solute. Understand? अच्छा, प्लीज टेल मी द आंसर। आपको पोलर और नॉन पोलर तो पता होगा, इज दैट क्लियर? पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर क्या होते हैं? यस, रॉली सिंह, डू यू नो पोलर एंड नॉन पोलर? ओके, टेल मी, वाटर, वाटर इज पोलर या नॉन पोलर? H2O, is this a polar molecule, a non polar molecule?
यस, वाटर क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है? Ma'am, polar solution which is dissolved with uneven charges. Yeah, polar means which has charges, which in which the charge is polarized. ठीक है, it means that the H2O, ठीक है, H has developed a negative charge and H developed positive charge, partial positive and partial negative. ठीक है, this is the polar molecule. Okay, polarity is due to the presence of electronegativity. Understand? Polarity is due to presence of electronegative electronegative element. ठीक है, like oxygen. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट होता है दैट बिकम्स पोलर. ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं, वो इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं एंड दे डेवलप अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो इस तरह के पोलर मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करेंगे. ठीक है, नाउ टेल मी HCl, is it a polar or non-polar? Tell me fast. HCl is polar or non-polar? Yes, very good. Because इसके ऊपर भी partial negative and partial positive. Now the water में HCl can be dissolved. ठीक है, but what about benzene? Benzene is polar or non-polar? This is polar. ठीक है, also polar. तो polar में polar dissolve होता है. Benzene is what? Benzene में कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ठीक है, एंड पोलैरिटी के लिए वी नीड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. Okay, I will give you just one note here. Polarity, which has the most polar element, which has fluorine, oxygen, nitrogen, chlorine. These elements, which are electronegative elements, अगर ये elements present होंगे, then the molecule can become polar. ठीक है, but benzene is non-polar. Okay, benzene क्या होता है, non-polar होता है. तो benzene में non-polar like anthracene. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर. तो नॉन पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व होगा एंड पोलर में पोलर होगा. ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर सेम. इज दैट क्लियर? क्लियर होगी बच्चों? जस्ट वन पॉइंट, 10 substances having similar intermolecular forces, similar intermolecular force can dissolve. ठीक है, are soluble to each other, are soluble to each other. ठीक है, सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अभी H2O का पोलर पोलर का मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम होगा विद HCl, और इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम होगा. तो सब्सटेंस व्हिच हैविंग सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर सॉल्युबल टू ईच अदर. ठीक है, नाउ जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, यू विल सॉल्व दिस. व्हाई naphthalene, naphthalene balls, naphthalene dissolves in benzene and not in water. ठीक है, why naphthalene dissolves in benzene and not in water? या फिर क्वेश्चन ऐसे कर सकता है कि naphthalene dissolves in benzene but not in water. The reasons are as follows. There may be so many reasons. तो सर एग्जैक्ट रीजन क्या होगा? Yes, why naphthalene dissolves in benzene and not in water? Give fast, please. Yes, आंसर बताओ जल्दी.
Naphthalene dissolves in benzene but not in water. Why so? Answer: because naphthalene is non-polar and water is polar. Yes, very good, Raleigh Singh. Okay? Because naphthalene is non-polar and water is polar. Yes, exactly. Okay? So that's why it does not dissolve in water. But benzene is also non-polar. Same intermolecular force, same nature, they will dissolve. Okay? Other question is, okay, glucose या sugar, ठीक है, sugar is non-polar, right? Sugar तो non-polar होता है, but still it dissolves in water. Dissolves in water. Again, sugar is non-polar, but still it dissolves in water. अभी यहाँ पर तो हम देख रहे हैं we are non-polar, polar में dissolve हो रहा है. What may be the reason? Yes, give fast. Okay. So here the reason is sugar can dissolve in water due to the intermolecular force of intermolecular hydrogen bonding. Okay, it dissolves due to intermolecular hydrogen bonding. Hydrogen bonding between sugar and water. अंडरस्टैंड शुगर के जो शुगर में जो O होता है, ठीक है, C6H12O6 शुगर, इसका O और H2O का H, ठीक है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाता है. ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट डिसॉल्व्स. ठीक है, क्लियर है? तो sugar is the only exception which can dissolve in water. This is due to the hydrogen bonding. ठीक है. Okay, next factor is effect of temperature. Effect of temperature. ठीक है. Now what is the effect of temperature? तो जो हमारा रिएक्शन होता है, ठीक है, if the reaction is endothermic, ठीक है, या प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है देन व्हाट, देन टेम्परेचर हम, इफ टेम्परेचर इज रेस्ट, टेम्परेचर को अगर हम रेस करेंगे, ठीक है, solubility will also increase. Solubility is also increased. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं solubility भी बढ़ता है. ठीक है, when it is endothermic because of the, हमने पढ़ा था ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. ठीक है, according to what? According to ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल. पढ़ा है आपने ये 11th में, ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल. ठीक है, ये क्या बोलता है, अगर एंडोथर्मिक है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज होने पे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल solubility of NaCl, the salt, any salt in water. ठीक है, सॉल्ट का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो बढ़ता है. एग्जाम्पल, आपने एक कोल्ड वाटर लिया, यू हैव टेकन वन कोल्ड वाटर, ठीक है, एंड वन हॉट वाटर. ठीक है, इन कोल्ड वाटर solubility विल बी लो एंड हॉट वाटर इट विल बी मोर. ठीक है, कोल्ड वाटर में क्या होगा, solubility कम होगी, हॉट वाटर में ज्यादा होगी. ठीक है, लो solubility and in hot water it is more soluble. ठीक है, high solubility. Is that clear? ठीक है, but for exothermic reaction, ठीक है, for exothermic reaction
व्हाट विल हैपन, जहां पर हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, द टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को रेज करोगे, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, ठीक है। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर रेज करेंगे, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, क्लियर है। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट, ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट dissolves in water, dissolves in water, ठीक है, and with evolution of heat, with evolution of heat, ठीक है। अभी आप सोडियम सल्फेट को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, इट मींस इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इन दैट केस टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है, मींस अगर हमारे पास हॉट सॉल्यूशन है, हॉट है, ठीक है, तो हॉट टाइप में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी लो, ठीक है, एंड वाटर इन कोल्ड वाटर solubility हाई, ठीक है, मोर solubility, क्लियर है, इज दैट क्लियर। जहां पर हीट रिलीज हो रहा है एक्सोथर्मिक, वहां पर solubility टेम्परेचर बढ़ने से कम हो जाती है, ठीक है, एंड टेम्परेचर कम करने से बढ़ जाती है, ठीक है। वन मोर एग्जांपल, यू मस्ट हैव सीन कि जो वाटर, हॉट वाटर होता है, वहां पर फिश या एक्वेटिक एनिमल्स कम होते हैं, ठीक है। अगेन दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, solubility of gases in water, ठीक है, decreases with increase in temperature, ठीक है, with increase of temperature, अंडरस्टैंड। गैसेस की solubility भी हाई टेम्परेचर में या गर्म पानी में कम होती है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द रीजन कि गैसेस का जो solubility है या गैसेस डिसॉल्व इन वाटर विद एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, फॉर दैट केस solubility of gases in water decreases with increase in temperature, ठीक है, due to the reason is what, due to the reason, due to why, due to the reason get फर्स्ट क्या होता है, when gases dissolve, when gases dissolved in water, ठीक है, the gas converts into liquid, ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल से कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज कंडेंसेशन विच इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ठीक है, दैट इज, it is exothermic reaction, understand, that is why the gases are less soluble, यानी ऑक्सीजन जनरली जो गर्म वाटर, हॉट वाटर में होता है कम होते हैं, that's why in hot water lesser number of fishes are there, ठीक है, क्लियर है बच्चों ये solubility, ठीक है, क्वेश्चंस में भी आस्क्ड ऑन solubility, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility, effect of pressure on solubility, ठीक है, okay, pressure has no effect on the solubility of solid, understand, pressure has
no effect on solubility of solid in liquid. ठीक है, solid and liquid, क्योंकि solid और liquid is not compressible. ठीक है, आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, solubility will not increase. ठीक है, but in gases, ठीक है, बट गैसेस में क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है. ठीक है, बट इन गैसेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस. ठीक है, solubility increases with pressure. ठीक है, अंडरस्टैंड. सॉलिड और लिक्विड के केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉन कॉम्प्रेसिबल. हाउएवर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, सॉलिडिटी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. बट गैसेस के केस में क्या होता है, बिकॉज दे आर कॉम्प्रेसिबल, तो द solubility will increase with increase in pressure. ठीक है, we can say like the solubility is directly proportional to pressure. ठीक है, and this statement is given by Henry. इसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ. ठीक है, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हेनरी. अंडरस्टैंड, तो इसको हेनरीज लॉ कहते हैं. सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू पी. नाउ वी विल वी डू एस इक्वल टू के एच इंटू पी. ठीक है, प्रोपोर्शनल आते हैं तो हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं, और के एच इज नोन एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट. ठीक है, किसी बुक में ऐसा लिखा है, एंड इन सम बुक इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी एंड पी इज इक्वल टू के एच. ठीक है, तो स्टेट की बुक में ऐसा दिया है, एंड एनसीईआरटी बुक में ऐसा दिया है. ठीक है, वट एवर बुक यू फॉलो प्लीज डू दिस. ठीक है, इन एनसीईआरटी इट इज रिटन लाइक दिस. समझ आ रही है बच्चों आपको? आप कौन सी बुक फॉलो करते हो, एनसीईआरटी या अदर स्टेट बुक? विच बुक यू फॉलो? एनसीईआरटी. ओके, देन एनसीईआरटी में प्रेशर को जब लिखा है, ठीक है, P इज इक्वल टू के एच एस. ठीक है, तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला. अंडरस्टैंड, तो इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं. ठीक है, ये स्टेट बुक में ये दिया है. ओके, इसको आप छोड़ दो, एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया है, इसको यूज करना. ठीक है, however Henry law is that ki pressure is proportional to solubility. If you will increase the pressure, solubility will increase. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम कहाँ पे देखते हैं? ठीक है, सीलिंग द बोतल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक. ठीक है, इन सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स करते हैं. ठीक है, तो उसको बहुत ही हाई प्रेशर पे सील करते हैं इन सॉफ्ट ड्रिंक. ठीक है, हाई प्रेशर इज यूज्ड टू मेक द गैस soluble इन वाटर. ठीक है, इसलिए आप क्या करते हैं, जब आप बोतल को सॉफ्ट ड्रिंक के बोतल को ओपन करते हैं, ठीक है, तो जो एक्सेस ऑफ CO2 डिजोल्व होता है वो एक परसेंट के साथ बाहर आता है. ठीक है, तो इन सॉफ्ट ड्रिंक हाई प्रेशर is applied to dissolve CO2. अंडरस्टैंड, हाई प्रेशर लगाएंगे तो मोर ऑफ CO2 कैन बी डिसॉल्व. ठीक है, इसीलिए जब ऐसे हम बॉटल ओपन करते हैं, वी विल गेट अ एफर्वेसेंस, लाइक मतलब कुछ ऐसे ओपन करते ही CO2 बाहर आता है. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ टाइम इज अप. आई विल गिव यू एज क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस. ठीक है, the solubility of NO2 or N2, solubility of N2 gas in water at 25 degrees Celsius and 1 bar. ठीक है, is
6.85 into 10 raised to minus 4 मोल पर लीटर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस dissolved in water at 0.75 बार प्रेशर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकाल लेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड देन वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट को यूज करके नेक्स्ट इस प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना? इज इट एज ए होमवर्क फॉर यू? आप प्लीज इसको होमवर्क की तरह करके बताना मुझे कल। ठीक है ना, एक बार आप देख लो सारे, कोई डाउट्स है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी में? Solubility is the maximum amount of solute which can be added to make a saturated solution. Now factors, हमने तीन factors पढ़े, nature of solute and solvent। ठीक है, जहाँ पर solute polar में dissolve होता है and non polar due to the intermolecular force। ठीक है, due to what? Substance having similar intermolecular force are soluble to each other। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन हमने पढ़े। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है? फॉर एंडोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, एंड फॉर एक्सोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी कम होती है। ठीक है, जिस केस में भी जिस केस में भी हीट एब्सॉर्ब हो रहा है उस केस में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। ठीक है, एंड जिस सिचुएशन में हीट रिलीज होता है, इवॉल्व होता है, उन दैट केस solubility will decrease with high temperature। ओके, नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का कुछ खास इफेक्ट हमने सॉलिड और लिक्विड में हमें दिखता नहीं है बिकॉज दे आर नॉन कंप्रेसिबल, बट इन गैसेस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यस, क्लियर है। ओके, ओके बच्चों, बाय, कल मिलते हैं। ठीक है, ये करना, आप क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चल बाय।
हेलो बच्चों, आ गए आप ब्रेक करके, ब्रेकफास्ट करके? हेलो, एम आई ऑडिबल? प्रकाश कुमार, आवाज नहीं है? या ओके, लिसन, आज हम केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? फिजिक्स का लेक्चर कल होगा, ओके? तो विल कंटिन्यू विथ आवर केमिस्ट्री लेक्चर, ओके? तो हम लोगों ने क्या किया, सॉल्युबिलिटी समझा। ये क्वेश्चन आपसे हो गया था सॉल्व? क्वेश्चन हो गया था? हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यस मैम। ओके, ओके। किसने किया, कैसे किया आपने, बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं दैट इज P इज इक्वल टू KHS, ठीक है? Now the solubility of N2 gas, nitrogen gas in water at 25 degrees Celsius and 1 bar is this much. मतलब प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर इज गिवन एज 1 bar, ठीक है? And solubility is given as 6.85 into 10 raised to minus 4. So what we have to find? We have to find the KH. Okay. So KH is equal to what? P upon S, P by S. ठीक है? That is 1 by 6.85 to 10 raised to minus 4. When you will solve this, you will get the answer of KH. ठीक है? Once you get the KH, you can find out the molarity. KH को मल्टीप्लाई कर देंगे S से, विल गेट द, ओके, नेक्स्ट टाइम KH का वैल्यू आपका आ जाएगा, वॉट एवर यू विल गेट, ठीक है? फॉर मोलैरिटी, molarity is what? Its solubility is equal to P by KH, ठीक है? And P is given as 0.75. 0.75 upon whatever KH you will get, you can write out, ठीक है? And you will get the molarity, ठीक है? हो जाएगा? मैम व्हाट इज एस हियर? KH, एस, मैम एस। okay, S is the molarity. We have to find out the S. We have to find the molarity. See, question number 2. In first, solubility is given. The first one, for first case, solubility is given 6.85 10 raised to minus 4. Okay. For that, in first case, we have to find out the KH. Henry's law constant. Okay. For second question, we have to find out the molarity. And molarity is the solubility. Okay. So that's ओके what मैम। we have to find out the solubility. Okay. When you will solve this, you will get the KH. And putting this KH here, you can get the polarity, that is solubility. Okay. बट मैम सॉल्युबिलिटी इज ऑलरेडी गिवन। For first case, see, for 1 bar, question, understand the question first. The solubility of nitrogen gas in water at 25 degrees Celsius and for 1 bar, ठीक है? In फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है कि 1 बार प्रेशर, जब प्रेशर इसका 1 बार है, ओके, तब सॉल्युबिलिटी 6.85 माइनस 4, ठीक है? तो जब 1 बार यहाँ पर हमारे पास प्रेशर दिया है, 1 बार सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है? तो हम कांस्टेंट निकाल लेंगे, कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है? नाउ कांस्टेंट इज फिक्स्ड, बट अब क्या कर रहा है, सेकंड टाइम में उसने टाइम प्रेशर को चेंज कर दिया, ठीक है? प्रेशर चेंज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी वो निकालना है, समझ में आ रहा है? फर्स्ट केस में उसने प्रेशर दिया है और सॉल्युबिलिटी दिया है, तो हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है, ठीक है? अब सेकंड केस में क्या है, जब नए प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी कितनी चेंज होगी वो बताना है,
Yes, ma'am, got it. Okay. Now the next topic is vapor pressure. Vapor pressure. Okay. Of solutions of liquid in liquid. Okay. Now what we have to study the vapor pressure of solution of liquid in liquid. Okay. That is what binary solution. Binary solution. बाइनरी मीन्स दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड अंडरस्टैंड तो हियर वी हैव टू कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ठीक है विथ टू कंपोनेंट्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ठीक है सॉल्यूट भी हमारा क्या है लिक्विड है एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड है ठीक है मीन्स लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करके we will get what a binary solution okay here we have to take a solution of liquid in liquid ठीक है अब हम क्या करेंगे from now onward we are not going to use always the term solute and solvent ठीक है तो शॉर्ट में क्या करेंगे सॉल्यूट को हम कंपोनेंट वन ठीक है वन लिखेंगे एंड सॉल्वेंट को कंपोनेंट टू अंडरस्टैंड wherever you will get one you should understand कि solute की बात हो रही है ठीक है and wherever the term is written two it is for solvent ठीक है one for solute and two for ठीक है तो हम a इसको हम लोग क्या बोलेंगे a1 ओके दिस इज रिटन एज सॉरी असल में a1 एंड ये सॉरी सॉल्यूट के लिए टू लेंगे और सॉल्वेंट के लिए वन लेंगे फॉर सॉल्यूट टू एंड फॉर सॉल्वेंट वन इट विल बी मोर इजियर ठीक है समझ आ गया बात A1 मतलब सॉल्वेंट A2 इज द सॉल्यूट ओके नाउ यू नो वेपर प्रेशर व्हाट इज वेपर प्रेशर वेपर ओके जस्ट अ मिनट हेलो वालेकुम सलाम हाँ ओके जस्ट अ मिनट we will back in just 10 minutes okay
चलो वी आर बैक। ओके, स्टार्ट करें भी। हम क्या पढ़ रहे थे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, हमने क्या कहा कि यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड। अंडरस्टैंड? दोनों चीजें क्या है? लिक्विड्स है। ठीक है, मीन्स व्हाट? लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एंड नाउ ऑनवर्ड्स वी विल यूज वन फॉर सॉल्वेंट एंड टू फॉर सॉल्यूट। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? व्हेन आप एक लिक्विड होता है, ठीक है, अगर हमने सपोज यहाँ पर एक दो कंपोनेंट्स लिया, इसको क्लोज्ड कंटेनर में, ठीक है, वी हैव टू कंपोनेंट्स हियर, वन एंड टू। ठीक है, वन एंड टू, एंड बोथ आर लिक्विड्स। ठीक है, तो जो वेपर्स बनेंगे वो किसके बनेंगे? दोनों के बनेंगे। अंडरस्टैंड? And what will happen? A time will come, then the rate of vaporization and rate of condensation दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, पढ़ा है ना आपने ये 11th में? The rate of vaporization and rate of condensation when becomes equal. ठीक है, a condition is set कि the vapors become saturated. हम क्या बोलते हैं? Vapors become saturated. ठीक है, it means the amount of vapor is constant. अब इस टाइम पे जो वेपर्स है, ये वेपर्स जो प्रेशर अप्लाई करेंगे इसके सरफेस पे, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। ओके, so what is vapor pressure? The pressure of saturated vapors applied on the surface of liquid in a closed container. Okay, क्लियर है बच्चों? प्रकाश कुमार, रॉली सिंह। तो इस केस में हमें अभी क्या यूज करना है? हमारे पास दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स है। ठीक है, here we have what? We have two volatile components. ठीक है, we have two volatile components. It means ये दोनों components वन एंड टू they will vaporize. ठीक है, because we know कि दो components जो liquid होते हैं वो vaporize करते हैं, volatile होते हैं। ठीक है, तो we have two volatile components and both the liquids vaporize. ठीक है, both will both liquids, ये दोनों कैसे हैं? लिक्विड है, वोलेटाइल है, तो ये बोथ लिक्विड विल वेपोराइज, ये दोनों वेपोराइज करेंगे। ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम विल एस्टैब्लिश बिटवीन द वेपर्स एंड द लिक्विड एंड दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेपर्स बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं? वन के भी बन रहे हैं एंड टू के भी बन रहे हैं। ठीक है, वेपर्स आर ऑफ बोथ वन एंड टू बिकॉज कंपोनेंट्स आर ऑफ बोथ वन एंड टू। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, ए एंड बी, सॉरी वन एंड टू, और ये दोनों लिक्विड्स हैं, दैट्स वाई ये दोनों वेपर्स फॉर्म करेंगे, और इन दोनों के वेपर्स एक प्रेशर अप्लाई करेंगे सरफेस पे विच इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन? अब ये दोनों के दोनों लिक्विड्स वेपर्स बना रहे हैं, तो अब इनके जब प्रेशर अप्लाई होंगे उनको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मीन्स व्हाट? प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं वन एंड टू, और ये दोनों कंपोनेंट्स वेपोराइज कर रहे हैं, इनके दोनों के वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों दोनों के जो वेपर्स है सॉल्यूशन में उनको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, of both components are related to mole fraction.
what their mole fraction. ठीक है? और ये relationship है, this relationship was given by Raoult, and this relationship was given by Raoult. ठीक है, so इसको हम लोग बोलते हैं राउल्ट्स लॉ. ठीक है, was given by राउल्ट्स लॉ. इज दैट क्लियर? तो हमने क्या देखा कि हमारे पास सोल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट 1 and 2. बोथ द कंपोनेंट्स आर लिक्विड एंड बोथ विल वेपोराइज. ठीक है, तो बोथ हैव द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम, और ईच कंपोनेंट के वेपर्स को हम लोग पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रहा है. ईच कंपोनेंट विल अप्लाई अ प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन एंड दे आर नोन एज पार्शियल प्रेशर. ठीक है, एंड द पार्शियल प्रेशर इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन, and this relationship was given by Raoult. Is that clear? Now अपन Raoult's law को स्टेटमेंट में पढ़ते हैं. ठीक है, Raoult's law. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, Raoult's law. ये क्या कहता है? It states that partial pressure ठीक है, of any volatile liquid, of any volatile component is directly proportional to, या कह सकते हैं, is equal to vapor pressure of pure component, is equal to vapor pressure of pure component multiplied by mole fraction. ठीक है, multiplied by mole fraction. Now I will ask a question. What do you understand by the vapor pressure of pure component? What do you understand by the vapor pressure of pure component? Yes. What happened? What do you understand by vapor pressure of pure component? ठीक है, हमने क्या किया? We have taken a solution of two volatile liquids A1 and A2. ठीक है, हमारे पास क्या है? दो लिक्विड्स हैं, A1 and A2. ठीक है, इन दोनों का अगर सपोज वी हैव वन सोल्यूशन, सॉरी वन कंपोनेंट A1, इसमें क्या है? ओनली वी हैव वन कंपोनेंट दैट इज A1. ठीक है, only pure A1, pure one. You can say it is pure solvent. Understand? मतलब इसमें हमने अभी सॉल्यूट ऐड नहीं किया. ओके, तो इसके जो वेपर्स बन रहे हैं, ये वेपर्स किसके बन रहे हैं? दैट इज ओनली ऑफ द कंपोनेंट 1. ठीक है, इसमें जो वेपर्स हैं सिर्फ 1 के हैं, एंड दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. वेपर प्रेशर of pure component 1. ठीक है, इसमें जो वेपर्स बन रहे हैं सिर्फ 1 के, एंड दैट इज कॉल्ड एज P01. ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट? यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, दिस इज नोन एज P01. ठीक है, P01 मीन्स व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1. Understand? Now we'll take another solute liquid, that is 2. ठीक है, ये A2 है. now जो इसका वेपर्स बनेगा वो क्या होगा बताओ? इसके जो वेपर्स बन रहे हैं दैट इज ओनली फॉर 2. ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे? इट इज प्योर सॉल्यूट. अंडरस्टैंड? एंड इट इज नोन एज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2.
that is equal to P naught 2. Are you getting this one? Fine. P naught 1 means vapor pressure of pure component 1 and P naught 2 is the vapor pressure of pure component 2. ठीक है? Now when we will add, अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया. ठीक है? तो we will get a mixture. ठीक है? हमें एक मिक्सचर मिल गया जिसके अंदर 1 A1 और A2 ये दोनों है. नाउ व्हाट विल बी द, अब इस पे जो जो वेपर्स बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं, 1 के भी बन रहे हैं और 2 के भी बन रहे हैं. ठीक है? इट इज द सॉल्यूशन. इट इज व्हाट, इट इज सॉल्यूशन ऑफ 1 एंड 2. ठीक है? A1 एंड A2 कैन राइट दिस. अभी जो सॉल्यूशन के अंदर वेपर्स है वो A1 और 2 बोथ के. ठीक है? नाउ वी विल राइट लाइक दिस P1. ठीक है? P1 is the partial pressure of component 1 and P2 is the partial pressure of component 2. अंडरस्टैंड बच्चों? समझ आया P नॉट 1 और P1 का डिफरेंस क्या होता है? P1 is the partial pressure of component 1 in solution and P2 is the partial component of pressure of component 2 in solution. ठीक है? और ये क्या था, ये हमारा प्योर था एंड ये सॉल्यूशन है. ठीक है बच्चों, ये चीज बहुत क्लियर होना चाहिए. अगर ये क्लियर है तभी हम आगे अच्छे से समझ पाएंगे हमारे कंसेप्ट्स को. ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ गया है ये. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करते हैं, हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं. ठीक है? जस्ट राइट नाउ वी हैव डन अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन. ठीक है? तो अभी हमारा कैसे लिखेंगे, P1 इज इक्वल टू X1 इंटू P01. ठीक है? अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ. रॉल्स लॉ क्या कहता है, अभी भी हमने पढ़ा रॉल्स लॉ. The partial pressure of component 1 is equal to the vapor pressure of pure component 1 multiplied by its mole fraction. ठीक है? तो P1 is equal to X1 into P01. X1 क्या है, X1 is the mole fraction of X1 is the mole fraction of component 1. ठीक है? Now P2 is equal to what, X2 into P02. X2 is the mole fraction of 2. X2 is what, mole fraction of 2. ठीक है? तो P1 is equal to X1 P01 and P2 is equal to X2 P02. ये है रॉल्स लॉ. ठीक है? दिस इज द रॉल्स लॉ. इज दैट क्लियर? P01 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर 1. P2 is the vapor pressure of pure 2. ठीक है? नाउ लेट्स डू दूसरा लॉ है डाल्टन्स लॉ. डाल्टन्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों, डाल्टन्स लॉ. Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. ठीक है? अब ये डाल्टन क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन. ठीक है? हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास दो कंपोनेंट है 1 एंड 2. डाल्टन टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है, टोटल प्रेशर जो यहाँ पर बन रहा है,
that is the sum of the partial pressure of its components. ठीक है? We can say like this, according to Dalton's law, the total pressure, ठीक है, P above the solution is what? P, you can say P total. Pt is equal to P1 plus P2. ठीक है? Dalton's law is that total pressure है, that is the sum of the partial pressures of components. ठीक है? अगर हमारे पास दो components है, दो pressures बन रहे हैं P1 and P2, इन दोनों के सम को पार्शियल टोटल प्रेशर Pt कहते हैं. ठीक है? तो Pt is equal to what? यहाँ पर P1 क्या था, इसको 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं. ठीक है? तो P1 is equal to P naught 1 x1, P2 is equal to P naught 2 x2. ठीक है? According to Raoult's law. Dalton law is P1 plus P2. Raoult's law is P1 is equal to P naught 1 into x1 plus P2 is equal to P naught 2 into x2. ठीक है? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है. मोल फ्रैक्शन का सम मतलब x1 plus x2 equal to what? Yes, it should be equal to 1. sum of mole fraction is always 1. equal to 1. Yes. तो ये क्या हो जाएगा 1. ठीक है? तो now x1 is equal to, it will become 1 minus x2, right? तो now p की जगह, p के हम x1 की जगह पर हमें ये पुट कर देना है. ओके? तो pt is equal to p naught 1 minus x2 plus p naught 2 x2. ठीक है? तो इसको अब अगर हम इस टर्म को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P नॉट 1 माइनस P नॉट 1 इंटू x2 प्लस P नॉट 2 इंटू x2. ठीक है? नो हम इसमें x को कॉमन ले रहे हैं. ओके? तो अब हमारा क्या आ जाएगा, P नॉट 2 माइनस P नॉट 1, कॉमन हमने क्या लिया, x2 ले लिया, प्लस ये वाला P नॉट 1 यहाँ पर आ गया. अंडरस्टैंड? इट मीन्स व्हाट, जो P2 है, PT टोटल प्रेशर, ये x2 का से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है? PT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2. इससे हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन P एंड x. ओके? Okay, because P02 and P01 are constants for a liquid, so there is a relation between what, PT and x2. Okay, PT and x2. It means what, P is proportional to x. Understand? So now if we will plot a graph between P and x, P and x. ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, इधर हमारा क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर, and either this side it is mole fraction. Mole fraction. Now tell me का अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब P और T, P और X, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देन द ग्राफ विल बी ऑफ स्ट्रेट लाइन. जैसा ग्राफ बनेगा, here the mole fraction x1 is equal to 1, so x2 is what, that is 0. ठीक है? धीरे धीरे x1 कम होकर 0 हो जाता है and x2 becomes 1. ठीक है? Now the graph of the pressure, यहाँ पर जो x1 component 1 है, so the graph will be like this.
और यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट है, 1 and 2, ठीक है। ऑब्वियसली 1 को हम सॉल्वेंट मानते हैं और 2 को सॉल्यूट मानते हैं, तो 1 का जो प्रेशर होगा वो 2 से ज्यादा होगा, ठीक है। प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो अभी 1 का प्रेशर यहाँ पर मान लो बनता है, ठीक है। दैट इज पी, दिस इज पी नॉट 1, बिकॉज यहाँ पर प्योर कंपोनेंट 1 है। एंड नाउ व्हाट वी हैव सीन कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तब ये जो इसका प्रेशर है वो धीरे 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 कम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा फॉर कंपोनेंट 2, इट विल बी प्योर पी नॉट 2, ठीक है, विच इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो ये इस तरह से रेज करेगा। एंड पीटी, ये जो टोटल प्रेशर यहाँ पर सोल्यूशन में है, दैट इज पीटी। पीटी इज इक्वल टू व्हाट, ये P1 हो गया और ये P2 हो गया, ठीक है। ये प्योर कंपोनेंट का था जहां पर सिर्फ कंपोनेंट 1 था, ये सोल्यूशन के अंदर P1 कहलाता है, क्लियर। ये कंपोनेंट 2 का है जहां पर प्योर है तो P02 है, और ये P2 कहलाता है। और PT इज इक्वल टू व्हाट, P1 प्लस P2, ठीक है। दिस इज द ग्राफ, ठीक है। क्लियर है बच्चों सब? रॉली सिंह, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके। नाउ ये जो ग्राफ है, दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमने जो पढ़ा अभी, दैट इज द रिलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ये रॉल्स लॉ एक्सप्लेन करता है, और इन दिस गॉट, तो दिस ग्राफ इज एक्सप्लेनिंग द रॉल्स लॉ, ठीक है। यू कैन से दिस ग्राफ इज फॉर रॉल्स लॉ। जो भी सोल्यूशन रॉल्स लॉ को एग्जैक्टली फॉलो करेगा, वो ये ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा शो करेगा, ठीक है। Now let's study about ideal solution and non-ideal solution. ठीक है, ideal solution and non-ideal solution. ठीक है, ideal means what? The solution which will obey this Raoult's law exactly. ठीक है, पूरी तरह से ये Raoult's law को obey करेगा. That is the ideal solution. ठीक है, so first of all we will do like this. Ideal solution means what? Those solution which obeys Raoult's law. ठीक है, Raoult's law समझते हो ना? जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है वो आइडियल सोल्यूशन होता है, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या? डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, ठीक है। आइडियल में क्या होता है? जब दो कंपोनेंट्स को मिलाकर सोल्यूशन बनता है, ठीक है। सपोज वी हैव टू कंपोनेंट्स, यहाँ पर दो कंपोनेंट्स है, 1 प्लस इसमें हमने दूसरा ऐड कर दिया 2, ठीक है। इनका क्या बनेगा? एक सोल्यूशन बनेगा जिसके अंदर 1 and 2 दोनों होंगे, ठीक है। अभी जब ये सोल्यूशन जब ये बन रहा है, ठीक है, लिसन केयरफुली, अभी जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1 और 1 के बीच में कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा, 2 and 2 के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब जब इनको हम ऐड कर रहे हैं तो अभी क्या हो रहा है? ये 1 1 का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये ब्रेक होगा, 2 2 का इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रेक होगा, ठीक है। एंड नया इंटरमोलिकुलर फोर्स बनेगा 1 और 2 के बीच, ठीक है। तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, तीनों का जब इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे, तभी वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। व्हेन द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन 1 1 2 2 एंड 1 2, इट मींस व्हाट? जितना एनर्जी हमें, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 1 2 2, ठीक है, उतनी जितनी एनर्जी हमें इसको ब्रेक करने में लग रही है, उतनी ही एनर्जी 1 2 को फॉर्म होने में लग रही है। इट मीन्स व्हाट? डेल्टा
ओके, तो हम लोग क्या बातें कर रहे थे? रॉल्स लॉ, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे एग्जाम दे रहे हो, डिस्टर्ब होगा, ये तो तुम्हें डिस्टर्ब होगा। वहाँ बैठ जाओ, बोलो, और तुम्हें डिस्टर्ब होगा। वही मैं बोल रही थी। ऑल द बेस्ट। ओके, यस। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? द एंथैल्पी चेंज इज जीरो, मींस व्हाट? amount of energy required to break the intermolecular force of solute and solvent, and in, the energy released during the formation are same, ठीक है। But here delta H is not equal to zero, ठीक है। आइडियल में डेल्टा H जीरो के बराबर नहीं होता है, ठीक है। Now here what? Volume change delta V is also equal to zero, ठीक है। इट मीन्स व्हाट कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो इनके बीच में लग रहा है, जो इनके बीच में लग रहा है, इनके बीच में लग रहा है, इन सबका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम होने की वजह से स्क्रीन इज नॉट विजिबल। शेयरिंग तो हो रहा है। स्क्रीन विजिबल हो गया अभी? Yes. ओके, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल, हमने ये बात कर रहे थे। आइडियल सोल्यूशन में क्या होते हैं? डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज जीरो होता है। इट मीन्स कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबके सब सेम होते हैं, ठीक है। एंड नॉन आइडियल में डेल्टा एच इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, मीन्स व्हाट? व्हेन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, जब सॉल्यूशन बनेगा, देयर मे बी सम हीट मे बी एब्सॉर्ब और हीट मे बी रिलीज्ड, ठीक है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा डेल्टा एच की वैल्यू सेम नहीं आई, जीरो नहीं होती, ठीक है। डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स व्हाट? अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो सबके सेम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का स्ट्रेंथ सेम है, तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है वो भी सेम होगा। एंड वॉल्यूम इज व्हाट? वॉल्यूम इज द डिस्टेंस या टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द इंटरमॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट सब में सेम रहेगा, तो वॉल्यूम विल बी सेम, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे 20 ml लिया, 30 ml, ठीक है, तो सॉल्यूशन विल बी 50 ml, ठीक है। delta V is equal to zero. But here delta V is not is equal to zero. ठीक है। सोल्यूशन जो बनेगा उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मे बी हाई और मे बी लो। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स के डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन आइडियल सॉल्यूशन व्हाट हैपन?
the intermolecular force, okay, between solute is equal to solvent, okay, which is equal to solvent, okay. And here the intermolecular force is not equal to. Intermolecular force between solute is not equal to solvent. ठीक है, इसमें सबके इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जैक्टली सेम है और इसमें सेम नहीं, ठीक है। इसमें मेनली एग्जांपल्स से क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जांपल्स क्या हो जाएगा इसका, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स का सबका सेम होगा, ठीक है। तो आइडियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल ऑफ लाइक बेंजीन बेंजीन एंड टॉलिन। अंडरस्टैंड? बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। टॉलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे टॉलिन, ठीक है। इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक है। जब इनको सॉल्यूशन बनाएंगे, इनको मिक्स करेंगे, तो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स भी एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो जहां भी एग्जांपल्स में सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं, वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो बेंजीन बेंजीन या फिर ऑर्थो ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, पाराक्लोरोबेंजीन, इस तरह का, मतलब जहाँ पर ऑर्थो पारा वाला कुछ होगा, तो वहां पर का जो स्ट्रक्चर होगा सबका सेम होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स भी सेम होगा, ठीक है। नॉन आइडियल में क्या होगा, इनके अंदर नॉन आइडियल ऑफ टू टाइप्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें भी टू टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब, अभी देखो से हमारा रॉल्स लॉ का जो ग्राफ था वो इस तरह से शो कर रहे थे, ठीक है। ये P01 था, 0 पे आता, सॉरी, ओके। ये रॉल्स लॉ का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर x1 1 है, यहाँ पर x2 1 है, ये PT है। पर फॉर पॉजिटिव डेविएशन इसका जो ग्राफ होगा वो इस नॉर्मल ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। इट विल बी लाइक दिस। तो प्रेशर जो वेपर प्रेशर विल बी मोर, इट मीन्स व्हाट, कि इनका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, ठीक है। वेपर प्रेशर इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन रॉड्स, ठीक है। वेपर प्रेशर इज मोर देन नॉर्मल, ठीक है। नीचे जाएगा, हाँ। नेगेटिव में क्या होगा, लोअर, तो वेपर प्रेशर लो कब होगा, वेपर प्रेशर लो कब होगा, लॉजिक लगाओ। अभी तो ग्राफिक से नहीं हो रही, क्या होगा, बैटरी लो,
चलेगा आधा घंटा? हेलो, अरे इधर टैब के बैटरी डाउन हो गई है। हाँ, जल्दी लाओ चार्जिंग, हाँ चार्ज से